Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti. समाधान स्वरूप बनना है। On doit devenir l'incarnation des solutions. Je crois, je suis certaine que vous avez bien baraté ce qui est le niveau volant. Le niveau volant, ce sont les anges. Et à tout instant, dans le monde physique, on doit tout faire avec beaucoup de concentration. Et ce n'est pas, on oublie tout, il y a des manques dans ce que l'on fait parce qu'on est un ange. Je pensais, on doit à la fois être en train de voler et on doit aussi avoir une bonne prise de terre. Notre niveau doit être toujours le niveau angélique, mais tout ce que l'on fait dans le monde physique doit être fait avec beaucoup d'attention. Et deuxièmement, en se déplaçant sur le chemin spirituel, il y a beaucoup de compagnons et je suis certaine que vous allez avoir beaucoup de coopération et beaucoup en compagnie les uns des autres. Mais quand il y a des comptes karmiques et qu'on doit transformer nos sanskars et absoudre nos péchés, seul Baba peut faire ça. J'ai eu la réalisation suivante, combien il est important d'être dans le souvenir constant avec Baba et toujours se dire que c'est la tâche de Baba. Et quand on se dit que c'est la tâche de Baba, il y aura le souvenir du Baba. Et j'aime beaucoup cette méthode. Quoi que nous fassions, d'être dans cette conscience que c'est le seva du yaga et que c'est la tâche de Baba. Et quand on se souvient de la tâche de Baba, on va aussi se souvenir du Père unique, le Baba unique. Et vous allez recevoir le pouvoir de l'unique. On ne doit pas oublier un support, une force. Et on a besoin du soutien, le soutien des autres, mais intérieurement, on doit toujours penser que c'est Baba qui nous les a envoyés et que c'est Baba qui nous donne cette aide. Baba travaille à travers nous en tant qu'instrument. Et on doit avoir la gratitude pour Baba. On doit remercier tout le monde, mais intérieurement, on doit se souvenir que c'est Baba qui a donné la sagesse à l'âme et leur a donné la sagesse de faire tout cela pour nous. Donc, avoir des remerciements et de la gratitude pour Baba. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque étape, chaque pas, à tous les obstacles, les épreuves, on peut les surmonter. Elles disparaissent. Et après avoir pensé, réfléchissez-y combien il est important d'appartenir à l'unique et à personne d'autre. Ce que Baba peut faire, personne d'autre ne peut le faire. Même si les gens vous aident beaucoup, vous pouvez avoir. Mais on a eu beaucoup d'expériences de l'aide de Baba. On a entendu beaucoup de ces histoires aussi. Beaucoup de gens partagent de belles histoires et tout ce que les gens ont réussi, ont eu comme acquisition, réalisation, parce que Baba a participé. Alors, gardez toujours dans vos yeux et dans votre cœur
Dans vos yeux, dans votre cœur, gardez toujours le Père fond. एक बाप दूसरा ना Alors, कोई gardez toujours le Père dans vos yeux, dans votre cœur et restez उसी में absorbés dans l'amour रहो। d'appartenir à l'unique Père et à personne d'autre. तो जो आई हुई परीक्षाएं हैं Vous serez alors en mesure de समस्याएं हैं surmonter les tests, les épreuves, les problèmes. बाबा कहते हैं वो संकल्पों को Sera dit, et जैसे toutes पानी les पर लकीर pensées inutiles ou perdues qui उसको viennent, उतार कर comme पानी si vous में traciez une ligne sur l'eau बन जाएंगे et vous réussirez avec les honneurs. जैसे पानी में लकीर तैरती है क्या Donc la ligne ne वैसे कोई भी restera pas समस्या sur आएगी l'eau. कोई भी विघ्न आएगा Restera-t-elle? Non. De la même उसका कुछ manière, नहीं होगा quand il y aura des obstacles कहते ou हैं des épreuves, कितना il n'y भी aura aucun कितना effet बड़ा जहाज sur होता है l'âme. समुद्र में चलता है कितनी जोर की Alors, on हवाएं parle चारों d'un तरफ से d'un पछाड़ती bateau हुई लहरें qui होती हैं vogue sur la mer आप 5 मिनट के बाद देखो et les कुछ भी vagues नहीं है viennent de chaque côté du bateau, तो ऐसे ही जब mais आज après 5 minutes, हमारे ऊपर quand कोई le bateau est passé, il विपत्ति n'y a ना plus हो de ces असर vagues. ना हो Donc, c'est comme les ये problèmes et les बहुत बहुत situations समझदारी है passent et elles ne doivent laisser हाँ, aucune trace कि sur कुछ nous. हुआ कुछ सुना कुछ Et les देखा gens mettent aussi souvent beaucoup de temps à और वो corriger la रास्ता जो है situation et ça laisse वो souvent सही नहीं रह des सकता empreintes très इसलिए बाबा को profondes. समाये Et रहो alors, à ce moment-là, le niveau ne reste pas आंखों stable, में दिल n'est pas में stable एक चीज et याद रहे alors तो rester कहते हैं dans जो भी l'unique, dans आएगा le souvenir du सब Père पास unique. हो Et जाएंगे à chaque fois que ओम les problèmes viennent, vous passerez avec les honneurs. Om Shanti. ओम शांति अव्यक्त Om मुरली रिविजन Shanti. C'est la 1919 révision du फरिश्तों के Murli रहस्य का Aviak de ध्यान 1900, à partir de 1969, le chit-chat du cœur de l'ange. Alors, c'est le Murli Aviak du 18 juillet 1971. अव्यक्त वाणी तारीख है 18 जुलाई 1971 विल पावर और कंट्रोलिंग पावर अपने अंदर विल La पावर volonté और et le कंट्रोलिंग pouvoir de पावर volonté et le pouvoir de दोनों contrôle. ही पावर Faites-vous स्वतंत्र हो l'expérience à la सकते fois हो de la volonté et du pouvoir de contrôle en क्योंकि vous-même, अपने parce que पुरुषार्थ ces के deux लिए pouvoirs sont extrêmement आध्यात्मिकवाद nécessaires की à उन्नति votre के लिए propre effort यह et दोनों au ही progrès de पावर्स tous les autres अति âmes. आवश्यक है Si vous n'avez pas de अगर pouvoir अभी de भी contrôle et de कंट्रोलिंग volonté पावर en vous-même, और विल पावर नहीं है तो alors vous n'avez pas le विल pouvoir de faire पावर en की sorte शक्ति que नहीं les आ autres सकती fassent quelque औरों chose. की जो व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ चलन C'est उनकी alors गति que चलती les रहेगी autres, वो कंट्रोल vous ne नहीं pourrez कर pas amener सकते les autres à contrôler leurs pensées inutiles ou leurs विल comportements पावर नहीं inutiles. है Vous तो n'avez aucune विल volonté. पावर La अर्थात volonté जो भी signifie कुछ que भी quoi que vous fassiez, que ce soit par संपूर्ण vos pensées, वस्तुओं vos का paroles ou vos वह actions, कर्म cela द्वारा doit toujours मैं être सही voulu बाप के आगे विल ou donné au अर्थात अर्पण Père. करते C'est-à-dire que ça जैसे doit भक्ति être मार्ग में offert जो au भी Père. कुछ करते हैं Sur le chemin de la करते हैं Bhakti, चलते quoi हैं qu'ils fassent, qu'ils mangent यह ou बाबा marchent, कहते हैं ils इस disent पर pour le अर्पण plaisir लेकिन de le dire यहाँ que c'est ऐसा offert कहते à हैं कि Dieu. जो भी किया Cependant, वह ici, vous comprenez que quoi कार्य que vous भाग के fassiez, कल्याण vous के l'avez, प्रति विल किया vous l'avez donné pour le अंततः bénéfice du जो Père कुछ है bienfaiteur. वह Si अर्पण vous करते continuez à offrir जाएंगे tout ce que vous तो avez, अर्पणमयी vous दुनिया deviendrez le miroir de जहाँ quelqu'un qui mérite जिसको une अर्पण किया offrande. जिसके La प्रति vision अर्पण de किया celui à qui vous avez वह offert quelque chose, साक्षात्कार de ऐसे celui pour अर्पण से qui vous l'avez offert, est अपने ही automatiquement स्वरूप को reçu होता है
par chacun à travers une telle offrande. करके दर्पण Ainsi, भरने का पुरुष l'effort nécessaire या pour offrir वह quelque chose et devenir un विवेक miroir शक्ति est celui और de la दूसरा volonté et कंट्रोल deuxièmement, du pouvoir de contrôle. जहाँ Vous चाहे devez वहाँ pouvoir अपने vous आप को stabiliser, c'est-à-dire अर्थात dire अपनी स्थिति votre को scène कर सके où vous le souhaitez. ऐसे नहीं कि बैठे अपनी Il ne स्थिति faut pas को que vous स्थिर vous करके asseyez pour stabiliser votre बाकी niveau dans याद le में souvenir de Baba, और mais उसके plutôt विषय que में vous ayez des सतत pensées व inutiles et व्यर्थ que votre स्थिति में niveau जाए fluctue यह कंट्रोलिंग ou que पावर vous का n'ayez प्रभाव aucun एक pouvoir de सेकंड से contrôle. भी कम समय En में moins d'une seconde, अपने vous devriez संकल्प pouvoir जहाँ stabiliser vos चाहे वहाँ pensées टिका सके là où vous le souhaitez. अगर स्वयं की स्थिति को नहीं टिका Si vous n'êtes pas en सकेंगे mesure de तो stabiliser औरों votre को propre आत्मिक niveau, स्थिति में comment allez-vous कैसे faire टिका en sorte que सकेंगे les autres se stabilisent dans le इसलिए niveau de la अपनी conscience de विशेष l'âme? C'est और pourquoi vous devez स्टेटस constamment दोनों rester की conscient स्मृति सदा de votre रहे niveau et de तब votre ही लक्ष्य statut. की Ce सिद्धि n'est हो alors que सकेगी vous pourrez réussir dans ये vos विल पावर qualifications. और कंट्रोलिंग Alors, पावर qu'allez-vous garder दोनों comme के लिए élément मुख्य क्या principal याद रखें pour, जिससे de la दोनों volonté पावर्स et du contrôle? Vous इन allez दोनों garder पावर्स les के deux, पुरुषार्थ vous से imprégner ही des deux प्रकाश pouvoirs. La méthode आदि pour faire des efforts संपन्न है pour ces deux कंट्रोलिंग pouvoirs पावर est के लिए incluse सदैव dans un seul mot pour महामंत्र chacun. सामने Pour रहे contrôler le pouvoir, तो gardez constamment le grand ऑटोमेटिकली जो contraste श्रेष्ठ होगा Mahan उस Anta तरफ बुद्धि devant जाएगी vous et votre और जो intellect व्यर्थ ira महसूस होगा automatiquement vers ce qui est उस élevé. तरफ बुद्धि Votre ऑटोमेटिकली intellect नहीं n'ira जाएगी pas vers ce qui est जो भी considéré आप comme करते étant हो du gaspillage. तो महान Quelles que soient मंत्र les actions que शुद्ध vous और अशुद्ध accomplissez, सत्य और असत्य si vous पूर्ण continuez à voir le स्वरूप grand यहाँ contraste पर entre le है pur et l'impur, la व्यर्थ vérité et le मनसा mensonge, la संकल्प différence entre la यहाँ पर है conscience et l'oubli, सब la différence बातें entre le व्यवहार gaspillage et le निरंतर करते puissant, जाओ alors votre तो दूसरी intellect est तरफ बुद्धि automatiquement ऑटोमेटिकली contrôlé. कंट्रोल हो Et pour la जाएगी volonté, और il y a वही un grand ये है mantra, Mahan महामंत्र Mantra. अगर Si महान vous अंतर souvenez à la और fois le grand महामंत्र ये contraste दोनों et le भी याद grand रहे mantra, तो alors बुद्धि vous n'aurez अतः jamais कंट्रोल à faire करने d'effort के लिए pour मेहनत contrôler votre नहीं करनी intellect. पड़ेगी यह C'est समझना facile. अच्छा आगे की मूली कल सुनेंगे ओम शांति Et c'est à suivre demain. Om Shanti.